So good afternoon everyone. Today we'll be solving deflection of beam from Youth AE. So there are 183 questions in Youth AE on the topic deflection of beams from strength of materials. So we'll be looking in the most important questions, be it statement based or complex questions only, not the simple ones which are simply formula based, like what is the deflection of cantilever subjected to point load, cantilever subjected to UDL, etc. and etc. So our first question is, the Castigliano's first theorem is applicable. Now we all know that Castigliano's theorem are used as one of the methods in which we calculate the deflection of the beam under a particular load using the second theorem mostly. So the question here has asked, the Castigliano's first theorem is applicable. Option A is for elastic structure, option B is for all statically determinate structures, यानी जिनका ds 0 है, only when principle of superposition is valid, या for all the indeterminate structures for which ds is greater than 0. Okay, so the correct answer is for elastic structure. So now we'll see the concept behind it. So you see the first partial derivative of the total energy, that is del u in a structure with respect to any particular deflection component, that is your with respect to the partial differentiation of the total internal energy with respect to the deflection component is equals to the force applied at that point in the direction. So if this is my body and this is how much the deflection has happened, तो total energy जो इसमें store हुई लोड की वजह से ये जो deflection हुआ है उसका differentiation अगर मैं करूँ total energy का इस deflection के रिस्पेक्ट में, तो डैट विल टेल मी द फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन आई है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियरली और नॉन लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि यार इलास्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इलास्टिक स्ट्रक्चर सिंपली एक स्ट्रक्चर है जो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करता है once the load is removed. Like if this is my structure and I applied a load and it got deflected like this, but it eventually returns back to its original shape and there is no permanent deformation. So that is your elastic structure. But then what is your linearly or non-linearly? So you see, this is your stress and strain graph. If the graph of stress strain or load deformation graph is linear, then it would be a linear elastic structure. But if be it linearly or be it non-linearly, your structure will return to its original shape and position, but the deformation will not be varying linearly in both the cases. Like if this is your P delta, but this is an elastic structure, and if by some reason the curve goes like this, but it is in its elastic limit, so this is a non-linear elastic structure. So ये बोलता है कि जो पहला कैस्टिग्लियानोस का फर्स्ट थ्योरम है वो लीनियर हो चाहे या नॉन लीनियर बट इलास्टिक स्ट्रक्चर हो, उसके लिए फर्स्ट कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल. Then the first theorem says that the partial derivative of the total internal energy with respect to the deflection in any respect to any particular deflection at a point is equals to the force applied at that point in the direction given. Or the second theorem says that the partial derivative of the total internal energy in a structure with respect to the force applied at any point is equals to the deflection of the deflection at the point of application. यानी दोनों एक दूसरे के you can say they are just complementary to each other. कि
टोटल एनर्जी का डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो डैट विल गिव यू द फोर्स बिहाइंड इट, और अगर टोटल इंटरनल एनर्जी का आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो और आपको अगर लोड पता है देन यू कैन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, जो कि हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर में यूज़ करते हैं जो जब भी हमें कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स करनी हो। बिकॉज गिवन सिनेरियोज में जब भी हमें मान लीजिए ये हमारा पॉइंट लोड है और हमें डिफ्लेक्शन यूज़ निकालना होता है तो वी नो द लोड अमाउंट, हमें लोड का तो पता होता है, पी लोड है, हमें डिफ्लेक्शन निकालनी होती है, तो वी सिंपली पार्शली डिराइव द टोटल एनर्जी with respect to the force given and we find out the deflection. See, हमें पता है यार कि जो डिफ्लेक्शन इन बीम्स है उसका प्राइमरी कारण होता है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स का उसमें रोल बहुत ही कम रहता है। लाइक इट वुड बी 95% रोल विल बी ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन में रोल 5% या उससे भी कम होता है, तो हम इग्नोर मार देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर 2 mm की डिफ्लेक्शन हो रही है तो 1.95 mm की जो डिफ्लेक्शन होगी डैट विल बी ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट ओनली और बेंडिंग ओनली, एंड ओनली 0.05 mm विल बी ड्यू टू द शेयर फोर्स। ओके, सो हेंस इंटरनल एनर्जी मोमेंट के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट m² dx बाय 2EI, यहाँ पे EI इज़ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ऐसे निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है मोमेंट की एंड देन वी partially derive it with respect to the load given and we find out the delta in all the cases. Hence deflection of beams में इस theorem की importance है। But second theorem क्या कहता है कि मैं applicable हूँ only and only to the linear elastic structures. You cannot use me in non-linear. If the load and deflection curve is something like this is a non-linear elastic structure. No, you cannot apply this. यानी कि हम deflection नहीं निकाल पाएंगे अगर वो एक नॉन लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। नाउ एज यू नो कि जो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम है उसमें जो द फोर्स बिहाइंड कुड बी मोमेंट एंड इट कुड आल्सो बी अ लोड, पॉइंट लोड, और इट कुड आल्सो बी अ पॉइंट मोमेंट। सो इन प्लेस ऑफ डेल्टा इट बिकम्स द थीटा। सो आप जैसा कि हम पता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। सो कैस्टिग्लियानोस की जो थ्योरम है दैट यू कैन यूज़ फॉर फाइंडिंग आउट द slope and deflection, and this is how it goes. The first theorem is applicable for elastic and non-elastic, and the second theorem is applicable for only in the linear elastic, and first is for linear elastic and non-linear elastic. Let's see why other options were wrong. पहले का तो सही है, option A is right. फॉर ऑप्शन बी इट सेज कि सिर्फ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा, तो ये बात गलत है। ये थ्योरम स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है। देन ओनली व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज़ वैलिड, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इटसेल्फ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लीनियर सिस्टम्स ओनली, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर। और हमें पता है कि कैस्टिग्लियानोस जो थ्योरम है वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो और वहीं पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो सिर्फ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए होता है, तो हेंस सी इज़ रॉन्ग। एंड जस्ट लाइक ऑप्शन बी वाज रॉन्ग कि वो कह रहा था कि वो स्पेसिफिकली स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होगा, तो नहीं, और इनडिटर्मिनेट के लिए भी नहीं होगा, वो दोनों के लिए होगा। तो एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ था कि फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम बिहेव्स इलास्टिकली में भी लीनियरली एज वेल एज नॉन लीनियरली। So this is an infographic here, and we can summarize that principle of superposition is something that is applicable for linear systems only, whereas this Castigliano's second theorem is applicable for linear elastic systems only. And the Castigliano's first is applicable for both elastic system as well as elastic system, both linear and non-linear.